CBSE Mathematics Class 11th Chapter Appendix 1 Exponential Series। अब देखिए पहले to find the expansion of E which is known as exponential series। E means यूलर से जो हुआ है ellipson where n is greater than 1, that is 1 plus 1 upon n whole raised to power n is equal to 1 plus n into 1 upon n plus n into n minus 1 upon 2 factorial into 1 upon n square plus n into n minus 1 n minus 2 whole divided by 3 factorial into 1 upon n cube plus dash dash to infinity। अब देखिए यहाँ पर हम 1 एज इट इज़ लिख दिया n इंटू 1 अपॉन n। अब यहाँ से मैंने n एक कॉमन लिया ब्रैकेट के अंदर से, सो n इंटू n 1 माइनस 1 अपॉन n 1 इंटू 2 दैट इज़ 2 फैक्टोरियल को लिखा है 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n इंटू n। अब ये n कहाँ से आया, यहाँ से इस ब्रैकेट से बाहर निकाला मैंने, सो दैट विल बिकम n इंटू n इन ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n। और नेक्स्ट ब्रैकेट से भी मैंने n बाहर निकाल लिया कॉमन, सो 1 माइनस 2 बाई n ब्रैकेट क्लोज्ड होल डिवाइडेड बाई एक्सपेंशन ऑफ 3 फैक्टोरियल दैट इज़ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन n क्यूब प्लस डैश डैश टू इन्फिनिटी। नाउ दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस, अब देखिए इसको n और n है कैंसिल के, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये n स्क्वायर इधर है, यहाँ पर n स्क्वायर है, n स्क्वायर से कैंसिल हो गया प्लस n क्यूब। देखिए यहाँ पर n स्क्वायर आया था, एक यहाँ पर आया था n क्यूब हो गया था, सो n क्यूब इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन n इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 अपॉन n इंटू 1 अपॉन n क्यूब और n क्यूब कैंसिल हो गया प्लस डैश डैश टू इन्फिनिटी। नाउ अल्टीमेटली वी आर गेटिंग 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस 2 अपॉन n होल डिवाइडेड बाई 1 into 2 into 3 plus dash dash to infinity. Now we know that it is true for n is greater than 1। ये सही है किसके लिए, when n is greater than 1। if n is approaching to infinity, यदि n बहुत बड़ा होता जा रहा है, then 1 upon n 2 upon n and 3 upon n etc that will start tends to 0। ये 0 की तरफ बढ़ता चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा, देखिए तो when the denominator is increasing the quotient will be decreasing, so here the result will be approaching towards 0। so limit n approaching to infinity 1 plus 1 upon n whole raised to power n is equal to e, and that will be equal to 1 plus 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3 factorial plus dash dash to infinity। Leonhard Euler 1707 to 1783, the great Swiss mathematician, introduced the number e in 1748। Professor J.C. Adams worked out the value of E up to 260th place in decimal, whereas commonly the 7th place of decimal is used in calculation purpose। Now you see that 2 is less than E and E is less than 3 means E की जो वैल्यू होगी 2 और 3 के अंदर ही आएगी, that is equal to 2.71828182818228। Generally this much value is taken into consideration। Now to find the expansion
To find the expansion of e raised to power x, if x is greater than 1 by binomial theorem. देखिए 1 plus 1 upon n whole raised to power nx, that will be equal to 1 plus nx into 1 upon n plus nx in the second bracket nx minus 1 upon 2 factorial into 1 upon n square nx minus 1 nx minus 2 upon 3 factorial into 1 upon x cube plus dash to infinity. Now further you see 1 plus nx upon 1 upon n plus nx into n. अब हमने यहाँ पर n कॉमन ले लिया है इस ब्रैकेट से, सो nx इंटू n इन ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन n होल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस nx n ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन n, अगेन हमने n कॉमन लिया, n ब्रैकेट में x माइनस 2 अपॉन n ब्रैकेट क्लोज्ड होल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन n क्यूब प्लस डैश टू इन्फिनिटी. अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस एन एक्स इंटू 1 अपॉन n प्लस x इंटू n स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन n होल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर. ये n स्क्वायर और ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस x इंटू एन क्यूब ब्रैकेट में लिखे x माइनस 1 अपॉन n ब्रैकेट क्लोज्ड x माइनस 2 अपॉन n ब्रैकेट क्लोज्ड होल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन n क्यूब प्लस डैश टू इन्फिनिटी. नाउ द नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस एक्स, यहाँ पर देखिए ये n और n कैंसिल हो गया, यहाँ पर n स्क्वायर से कैंसिल हो गया, n क्यूब से कैंसिल हो गया. सो वी आर लेफ्ट विथ 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन n अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन n इन द नेक्स्ट ब्रैकेट x माइनस 2 अपॉन n ब्रैकेट क्लोज्ड होल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डैश टू infinity. But you see here the 1 plus 1 upon n and whole raised to power nx, that can be also written like this. In the inner you see 1 plus n whole raised to power n, again the square bracket is there, whole raised to power x. So the same thing can be written like this here, 1 plus 1 upon n whole raised to power n, again the bracket is put and again raised to power x. So 1 plus x 1 ब्रैकेट में लिखिए x माइनस 1 अपॉन n होल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x इंटू x माइनस 1 अपॉन n इन द नेक्स्ट ब्रैकेट x माइनस 2 अपॉन n होल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डैश टू इन्फिनिटी. Now when n is approaching to infinity, then 1 plus 1 upon n whole raised to power n, that will become 1 plus 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3 factorial plus dash to infinity, and that will be equal to e. And 1 plus x in bracket x minus 1 upon n upon 2 factorial plus x in bracket x minus 1 upon n in the next bracket x minus 2 upon n bracket closed whole divided by 3 factorial plus dash to infinity. Now it will be equal to 1 plus x square upon 2 factorial plus
x cube upon 3 factorial plus dash dash to infinity. Therefore, the first implies that the e raised to power x will be equal to 1 plus x plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus dash dash to infinity. Let it be capital A. It is a exponential series. जो हमने ये लिखा है, this is known as exponential series. Now e raised to power minus x, e raised to power minus x, that can be, you see, 1 minus x plus minus x whole square by 2 factorial plus minus x whole raised to power 3 upon 3 factorial plus dash dash to infinity. This can be further solved like this: e raised to power minus x equal to 1 minus x plus, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का पावर जो है ऑड नंबर है, सो माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस, सो अल्टरनेटिव प्लस माइनस आएगा यहाँ पर, प्लस डैश डैश टू इन्फिनिटी एंड लेट इट बी द बी. To find the value of e, put x is equal to 1 in a. In a में आप x is equal to 1 रख दीजिए, so you can get the value of e. That will be equal to, e will be equal to 1 plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus dash dash to infinity. Let it be the c. Now to find the value of e raised to power minus 1, put x is equal to minus 1 in the a. Both sides we have e raised to power minus 1, that will be equal to 1 minus 1 plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial. देखिए अल्टरनेटिव प्लस माइनस आएगा प्लस डैश डैश टू इन्फिनिटी. Above from 4 results can be summarized as follows: e is equal to 1 plus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3 factorial plus dash dash to infinity. Let it be the 1. E raised to power minus 1, that will be equal to 1 minus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial. मीन्स देखिए यहाँ पर 1 है, वहाँ पर माइनस है, यहाँ पर ऑड नंबर है, यहाँ पर भी माइनस है. जो ऑड नंबर आएगा उसके से पहले क्या होगा? माइनस. सो लेट इट बी e रेज़ टू पावर x, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश टू इन्फिनिटी. लेट इट बी द 3. e रेज़ टू पावर माइनस x equal to 1 minus x plus x square by 2 factorial minus x cube upon 3 factorial plus dash dash to infinity. Let it be the 4th. Now adding 1 and 2 we have e raised to power 1 plus e raised to power minus 1, that will be equal to 2 बाहर है ब्रैकेट से, inside the bracket you will get 1 plus 1 upon 2 factorial plus 1 upon 4 factorial प्लस डैश डैश टू इन्फिनिटी. अब यहाँ पर देखेंगे डिनोमिनेटर सभी 2 के मल्टीपल में होंगे. नाउ इसी दिस विल बी द 5th वन. ऑन एडिंग 3 and 4, 3 and 4 को ऐड करने पर क्या मिलेगा हमारे को? e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x, दैट विल बी इक्वल टू, टेक 2 कॉमन, इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल plus dash dash to infinity. Let it be the 6th. On subtracting 4 from the 3rd we have, means e raised to power x minus e raised to power minus x, that will be equal to 2 inside the bracket x plus x cube by 3 factorial plus x raised to power 5 upon 5 factorial plus dash dash to infinity. This will be the 7th. On subtracting second from the first, सेकेंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा?
e माइनस e रेस्ट टू पावर -1 दैट विल बी इक्वल टू 2 बाहर है ब्रैकेट के बाहर, इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश टू इन्फिनिटी. दिस विल बी द एथ expression. In place of x, if you put in place of x, we put iota x. Iota x in 7 we have e raised to power iota x minus e raised to power minus iota x, that will be equal to 2 iota inside the bracket x minus x cube by 3 factorial plus x raised to power 5/5 factorial dash up to infinity. मीन्स अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस से स्टार्ट किया, माइनस अगेन देखिए, और यहाँ पर क्या है, ऑड पावर है 3, 5, 7 लाइक दैट.